आज सेवेच्या भेटण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सन्माननीय कल्याण बॅनर्जी खासदार आहेत, तिथं लोकसभेमधील खासदार आहेत, कल्याण बॅनर्जी त्यांचे लीडर आहेत, सन्माननीय साकेत गोखले हे तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार आहेत, सन्माननीय घोष सागरिका घोष याही राज्यसभेच्या खासदार आहेत, शिवसेनेच्या वतीनं मी आहे, आमच्या राष्ट्रवादीच्या वतीनं विद्या चव्हाणजी, प्रभावळकरजी असे सगळेजण आम्ही एकत्र आलो. मधल्या काळामध्ये जे घडलं सेबीच्या स्टॉकिंगच्या 3 तारीख आणि 4 तारखेला त्या संदर्भात एक निवेदन देण्यासाठी माननीय कल्याण बॅनर्जी आलेत. आपल्यासमोर कल्याण बॅनर्जी ते सगळ्या गोष्टी सांगतील. As already said by Mr. Arvind Sawant, the leader of the party of the Shiv Sena UBT leader in parliament, we are the 3 from the Trinamool Congress. Sagarika is there, Gokhale is there, Sagarika from Trinamool, Saket Gokhale is there, and Vidya Chavan is there from the NCP, SCP, MLC. Earlier we wrote letters to the chairpersons that we have some grievances and we sought for an appointment regarding the manipulation scam which happened on the back of misleading exit poll for the Lok Sabha 2024. Now we came here, the chairperson is not there, but the 3 representatives of the SEBI, Mr. Bhatia and 2 others were also present. Initially they said about the performance of the SEBI, what are the SEBI is doing, SEBI's function, etc. We said that exactly that is the reason we have come, that SEBI had a glorious role during the past, and now we are having a confidence on the SEBI. That's the reason we have come and seeking for an investigation in respect of the matters that manipulation of the stock market by reason of the misleading exit poll for the Lok Sabha election 2024. Now these exit poll agencies is there, whether they are having any political connections with the political leaders or not. Where on 3rd there was a scarce by reason of the exit poll. That is 3rd, it has been increased, and 4th it has been crashed. Now because within the 24 hours 30 lakh crores money have been lost by the investors, small investors. But one lady, wife of Chandrababu Naidu, has earned 521 crores. There are other examples are there where the politicians have earned, their families have earned huge monies, huge profit. During the election, during the poll, Amit Shah repeatedly said in various election campaign, purchase it on 4th. Purchase it on 4th. Said Purchase it early, 4th you will yes, get purchase early, and 4th you will get benefit. 4th you will get the benefit. Then these types of person, who is he? Home Minister of the country. Is he having a link with this media? And all the time these oppositions are saying these exit polls are being done by the Godi media itself. Like, our pinpointing allegations are there against them. Therefore, we need an investigation to instill confidence amongst the people at large. An investigation is needed. An investigation is needed. Who has done, whether it has been done or not. Now this question remains, if this type of exit poll continues, in future there would be also this share scam. Whether this exit poll is being done for the profit of some politicians or the agencies who are doing it. Who are they in the agencies? Whether any relationships are there with the political persons or not. Who are they? Or what is the output? On what basis? What is the scientific basis?
You see, 7th phase election was continuing up to 6 o'clock, officially, the announcement. Those who are in queue, especially in rural area, it continued up to 7:30, 8 o'clock. How the exit poll starts from 6:30, how you have done it all over India. Something wrong is there, some manipulations are there. In West Bengal, we have seen also 2021 exit poll. The figures have not come. That are not tallied. The exit poll misdirecting the people at large. And it is having a tremendous effect, bad effect in share market. Today we have come to SEBI. Other issues will be taken later on in the election commission itself. When the exit polls expression, pictures which are there showing, which is having a tremendous financial bad effect, and people, 30 lakhs people have suffered at the cost of 2 or 3 or 5 or 8 or 10 big persons, mostly those who are politicians or related to political families. How Chandrababu Naidu's wife can earn this money was only for that reason whether the Chandrababu Naidu has become a partner of the NDA. That is the question also. Why Chandrababu Naidu has become silent now? Who was so much vociferous before 4th? Because his wife has got 521 crores by reason of share market. Before, earlier he was talking so much things, Chandrababu Naidu, I need these 4 cabinet, 5 cabinet speakers, etc., etc. Why Chandrababu Naidu is silent today? Must be there something wrong because of money. Therefore, these politicians, those who are earning monies, 100 crores, SEBI has to make an independent investigation. And we have said so that you see, even in the Adani's case, what has happened? Supreme Court has directed the Adanis regarding the share scam which was there to investigate into the matter. Supreme Court has said that only the SEBI is the specified agency to investigate. Earlier one letter was given by the chairperson to us. That is a regulatory body, it is nothing to do. It is not correct. Not only regulatory body, it is having a residuary jurisdiction. Residuary jurisdiction to investigate into the matters. Therefore, we are seeking for an investigation. We have not got anything from them saying to us any assurance that the investigation would be made. And we are sure they are afraid of Narendra Modi and Amit Shah. They are manipulating it. Main responsible persons are in this scam are Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah, at whose instance these agencies have acted. Exit poll agencies have acted. Immediate investigations is required. Main culprit rather, I will refer the expression main culprit in this scam is Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah. Narendra Modi and Amit Shah. No, Marvin. So you got no assurance. You are saying you got no assurance from SEBI. No, nothing has been said. They have heard us. We look into the matter. What we'll do. Our chairperson is not there. They have behaved very nicely, I must say. But ultimately, see, हम तो दामाद घूमने के लिए तो नहीं आया है ना. हम तो रिजल्ट के लिए आए थे ना. Rahul Gandhi has demanded JPC. Will you seek JPC? No. Arvind bolo. We are talking about us. Our stand. What we think, do, we'll tell later. The Honorable Kalyanji Banerjee has already elaborated whatever the details are to be told to you that have been expressed by him. Only thing is that the agencies because of which the 30 lakh crores have been lost by the common man. The same agencies are working for FII, Foreign Institute of Investors. The same agencies are working for exit poll. That linkage with them, that's really a serious thing to be investigated. And that is what we have pointed out to Mr. Bhatia, who is the whole time
member of the SEBI, and we asked him to investigate thoroughly the matter over there. He has taken the name of the Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister too. The very reason is that both these honorable ministers have appealed to the country to invest their money in the stock market so that they are going to get a huge profit on 4th of June. And because of exit poll, there was a spurt in the market. And the next day, on 4th June, when the result came, there is a crash in the market. Who lost it? The loss is incurred by a common man, not by a big people. That is what the matter is concerned for us. And therefore, we have asked for a detailed investigation with the SEBI. SEBI is a residuary, as he has rightly pointed out, powers to them. They can do the investigation. Honorable Supreme Court has also asked the SEBI to investigate the matter. And now let us expect the investigation. And the common man must get a result out of it, because this has become a practice, a political fraud, a social fraud, and economic fraud. Yes. It's a fraud about all the three parts. So this is a political fraud too, because the leaders of the country are involved in this matter, and therefore we are asked SEBI to investigate the matter. This is the right body to investigate. It is the right body. They have to investigate the matter and give solace to the people who have lost the money. See, this practice will continue further ahead. That is what we have said today. Mr. Thank Banerjee, you. one question I would like to ask. 2 weeks back, you had shot a letter to the chairperson, Mr. Madhavi here. Did you get any response that you had walked in physically to the office? Yes, we have said that we will be coming on 18th. She wrote us that she would not be here, and the SEBI is only the regulating authority. If they have, if we are having any evidence or anything, any materials, send it to her privately. Also to What add, is a privately? Yes. You I have see, written the first- 1 minute. I am just 1 minute. I am just replying to your question within one answer. That is exactly, if evidence has to be collected by the SEBI, they have to make an effort. Why they are saying we are making the allegations? This is the effect of this. Now therefore the investigation is needed. Why they will be asking materials from us? We are not the investigating agency. we had sent 2 letters. I had written them, Saket Gokhale. 2 letters to the SEBI chairperson. A member of parliament writes to the chairperson of a statutory body, "You are accountable to parliament as a statutory body." No response was received. The All India Trinamool Congress, then Mr. Derek O'Brien, our floor leader in the Rajya Sabha, wrote a letter. We did not receive a response on that. Forget investigation if the SEBI does not even, if they think that they're not accountable to even lawmakers. And the days of 300 par and 400 par are gone. The government doesn't have a majority. Every lawmaker today, any institution is accountable to MPs, and they must engage with MPs. This is not an era of brute majority anymore. 3 people are responsible. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Finance Minister Nirmala Sitharaman. Why is it on the 13th of May, the Home Minister Amit Shah said, buy shares, the stock market will boom? Why is it on the 23rd of May, the Prime Minister made a statement, buy shares, the stock market will boom after June 4th? Why has the Finance Minister also talked about share markets booming? So is he the Prime Minister of India, or is he giving advice on share markets and stock value? If there is a scam, if there is any kind of घोटाला, तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए अगर घोटाला हुआ है। इसको सेबी साबित करना होगा, इसको प्रमाणित करना होगा। अगर ये हुआ है तो इस्तीफा दो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। Thank you. हिंदी मराठीत काय? मला वाटतं हिंदी में भी बोलू, मराठी पहिली बोलू मराठी. आज आम्ही सर्व तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सन्माननीय कल्याण बॅनर्जी, सन्माननीय साकेत गोखले, सन्माननीय सागरिका घोष, आमच्यासोबत राष्ट्रवादी पार्टीच्या सन्माननीय विद्या चव्हाण मॅडम, आमच्या प्रभावकर्ताई उपस्थित, हे सगळेजण मिळून आम्ही आज सेबीच्या चेअरमनला भेटायला आलो. आता आपल्यासमोर जसं ते करतील, ते विल डू इट. साकेत गोखलेंनी जसं सांगितलं की आम्ही पत्र दिलं होतं
की आम्हाला भेट हवी आहे आणि आम्हाला या सेवेच्या संदर्भातलं आत्ता जे एक्झिट पोलमध्ये घडलं ते एक्झिट पोलमध्ये काय घडलं तर एक्झिट पोलच्या अगोदर जे घडलं ते जास्त महत्त्वाचं आहे. कारण एक्झिट पोलच्या अगोदर देशाच्या आदरणीय पंतप्रधानांनी आणि देशाच्या आदरणीय गृहमंत्र्यांनी जनतेला अपील केलं, आवाहन केलं की तुम्ही सगळेजण स्टॉक मार्केटमध्ये शेअर बाजारात पैसे गुंतवा. हे कोण सांगताय? देशाचे पंतप्रधान. कोण सांगताय? देशाचे गृहमंत्री. कोण सांगताय? देशाचे अर्थमंत्री. हे सगळेजण सांगतायत शेअर मार्केटमध्ये तुम्ही पैसे गुंतवा. आणि जो कल्याण बॅनर्जींनी मुद्दा मांडला 1 तारखेला संध्याकाळी 6ला मतदान संपलं पण प्रत्यक्षात मतदान 8, 8:30, 9 वाजेपर्यंत चालू असतं. अशा वेळेला 6:30ला एक्झिट पोल सुरू झाला आणि हे एक्झिट पोल करणाऱ्या लोकांनी मार्केट त्या 2 दिवसामध्ये एवढं बूम करून ठेवलं की लावा पैसे लावा पैसे. 4 तारखेला मार्केटमध्ये शेअर बाजारात प्रचंड मोठी वाढ होईल आणि तुम्हाला प्रचंड मोठा नफा होईल. या नफ्याच्या आशेपोटी सर्वसामान्य माणसांनी पैसे गुंतवले आणि त्या सर्वसामान्य माणसांचे 30 लाख कोटी रुपये ज्या दिवशी निकाल जाहीर झाला त्या दिवशी त्यांचं नुकसान झालं. या 30 लाख कोटी रुपयाला जबाबदार कोण आहे की नाही? आणि म्हणून सेबीला आम्ही म्हणतोय की ही जी लबाडी सुरू झाली तिथून सुरू झाली माननीय पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळं. त्यानंतर ज्या एजन्सीज आहेत ज्या एजन्सीज एक्झिट पोल पण दाखवतात आणि त्याच एजन्सीज FII म्हणजे फॉरेन इन्व्हेस्टर्स इन्स्टिट्यूशन ऑफ इन्व्हेस्टर्स आहेत त्यांच्याशी पण बोलतात. मग 31 मे पासून 3 जूनपर्यंत काय ट्रेडिंग झालं आणि फॉरेन इन्स्टिट्यूटने काय ट्रेडिंग केलं तुमच्याशी? कुणाला प्रॉफिट झालं? आणि मग हे राजकीय जी कोणी माणसं आहेत राजकारणातली धुरंधर त्यांना प्रॉफिट झालं का? तर त्याचं एक उदाहरण त्यांनी आंध्र प्रदेशातलं दिलं. आणि म्हणून या संदर्भात अतिशय गंभीर दखल घेतली पाहिजे. कारण सेबी ही संस्था त्यामध्ये चौकशी करू शकते, तिला तो अधिकार आहे. मग माननीय सुप्रीम कोर्टाने पण सांगितलं की सेबीने त्या अदानींच्या संदर्भात याची चौकशी केली पाहिजे. सेबीला साकेत गोखलेंनी जी पत्र त्याचं उत्तर दिलं गेलं नाही. काल रात्री उशिरा कळवलं तरी आम्ही आलेलो आहोत. कारण हा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेच्यासाठी आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं मजेशीर आहे हे मार्केट वर खाली होतं ते GDP वाढला म्हणून सांगतात. GDP ह्या मार्केटवर असतो, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर नाही, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर नाही, ह्यांच्या धंद्यावर आहे. आणि ही जी लबाडी चाललेली आहे ती नजरेस आणणं महत्त्वाचं होतं. म्हणून आम्ही संसदीय सगळे खासदार आणि NGBचे प्रतिनिधी स्टॉक शेअर बाजारातील होल टाईम मेंबर माननीय भाटिया आम्हाला आता भेटले. त्यांना आम्ही सांगितलं की हे इतकं सोपं साधं नाही. तुम्ही नुसतं आमचं पत्र घेतलं आणि उद्या आम्हाला ॲक्नॉलेजमेंट आपलं पत्र मिळालं नाही. आम्हाला याची चौकशी हवी आहे आणि ती गंभीरपणे याची चौकशी तुम्ही केली पाहिजे अशी मागणी आम्ही केलेली आहे. कारण सर्वसामान्य माणसांना 30 लाख कोटी रुपयांना यांनी गंडवलंय आणि ह्याचा नफा कोणाला झाला ते पण कळू द्या ना. मग त्याच्यामध्ये राजकारणी माणसांचे काही परिवार आहेत असंही त्याच्यामध्ये माहिती कळते. पण ही सगळी माहिती इकॉनॉमिक टाइम्स असेल किंवा आणखी वर्तमानपत्र असेल तुमच्यासारख्या माध्यमातून कळते. त्याची सत्यता पडताळून पाहण्याचा अधिकार, इन्व्हेस्टिगेशन करण्याचा अधिकार ह्यांचा आहे. ते सेबीने करावं अशी मागणी आम्ही आज केलेली आहे आणि त्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी आलेलो. सावंत जी हिंदी में बता दीजिए. आज आप जानते हैं कि देश में सेबी जो संस्था है हाल ही में चुनाव के दरमियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, इन दोनों ने इस देश की जनता को कहा कि आप शेयर मार्केट में पैसा डालिए और शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नफा आपको मिलेगा. 400 पार की लड़ाई ये तो आप लोग कर ही रहे थे एग्जिट पोल में. तो 400 पार लगा कर लोगों को कहा पैसा डालो बहुत मिलेगा आपको. तो ये सारा होने के कारण सर्वसामान्य जनता जो है उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया. अब बात हुई, इन्होंने कह दिया. कौन कह रहा है? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं. कौन कह रहा है? देश के गृह मंत्री कह रहे हैं. उसके ऊपर विश्वास रखकर हमारी वित्त मंत्री जी ने भी कहा. तो हमारे जो सर्वसामान्य जनता है उन जनता ने उसमें पैसे डाल दिए. अब क्या हुआ? 4 तारीख को एक्जिट पोल में मार्केट गिर गया. अब 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, घपला हुआ, नुकसान हुआ. नुकसान किसका हुआ? गरीबों का, मध्यम वर्गीयों का, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं. ऐसे फायदा किसको हुआ वो भी तो जांच होनी चाहिए. जैसे कल्याण बॅनर्जी 2-3 लोगों के नाम ले लिए
एक ही दिन में 500, 600, 800 करोड़ रुपया प्रॉफिट मिल जाता है। कैसे हो जाता है सारी चीज़ें? सेबी क्या साइलेंट बैठी क्या? मैंने पहले कहा यू शुड नॉट कीप अ साइलेंट ऑन दिस। आप लोग साइलेंट रहते हो, आपको इस पर जाँच करनी चाहिए। और ये जाँच इसलिए है कि ये स्कैम है, क्योंकि जो एजेंसीज है जहाँ जो एजेंसीज काम कर रही थी, जो एजेंसीज एग्जिट पोल बता रही, वही एजेंसी अपने फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टर्स के साथ भी बात करेगी। तो सही क्या है इसमें घपला कहाँ है? कौन है एजेंसी को? एजेंसी को डायरेक्ट करने वाला कौन था? किसने उनको मार्गदर्शन किया कि जाओ भाई ये भी बात न्यूज़ फैलाओ और जाओ भाई उनके साथ भी बात करो? तो ये सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। ये मांग करने के लिए आज हम सारे संसदीय जो हमारे सांसद है तृणमूल कांग्रेस के, शिवसेना के, एनसीपी के, आज आकर मिले हैं और उनको कहा कि इसकी जांच डिटेल में जांच होनी चाहिए। ये बड़ा स्कैम है और कुछ लोगों को बहुत भारी मात्रा में उसका लाभ मिला है और गरीबों को नुकसान हुआ है। उसकी जांच हम करने के लिए सेबी के पास थे। सेबी का अधिकार बनता है कि इसकी जांच करे और वो रिप्लाई करे। All we are, just 1 minute please. All we, just a minute, just 1 minute please. Our leaders, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी, सब लोग बहुत कंसर्न है। All they are very much concerned because of these types of scam. We came here as a representative of the parties, but we will take the matter in future. Not only in the parliament, we will also see to that this scam has to be detected and who are the perpetrator of this scam. We must see to that. We have already said 3 persons, Narendra Modi, Amit Shah and Nirmala Sitharaman. Immediately, Supreme Court takes so much public interest litigation. We will appeal to Supreme Court also. Take a suo moto action in this matter and appoint if necessary, appoint independent seat, taking all the police officers from different from the states, different police officers. We will appeal to the Supreme Court also. These types of scam cannot continue. Ultimately, it takes away the future prospect. It's a financial big scam, and these perpetrators. একটু বাংলায় বলে দিই, অনেকে বাংলায় রয়েছে। আমরা এসছি বাংলা থেকে। আমরা আজ এসছি, আমাদের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের আমি আছি, আছে সাগরিকা আছে, আমাদের গোখলে আছে, আমাদের অরবিন্দ সাবন্ত আছে, শিবসেনা ইউবিটি লিডার, উনি আমাদের দলনেতা ওখানকার পার্লামেন্টের শিবসেনার আছে। আমাদের বিদ্যা চৌহান আছে, ফর্মার এনসিপি এসএপি এমএলসি, উনি ফর্মার এমএলসি ছিলেন। আমরা আজকে যে জন্য এসছি সেটা হচ্ছে, এর আগে আমরা চিঠি দিয়েছিলাম যে স্ক্যামটা হয়েছে নির্বাচনের সময় এক্সিট পোল নিয়ে যে সমস্ত ডিসপ্লে করেছে, যা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখিয়েছে, তার জন্য অনেকে শেয়ার কিনে নিয়েছে, প্রচুর শেয়ার টাকা কিনে নিয়েছিল। পরে 4 তারিখে এক্সিট পোলের যখন নামে মিলেনি, শেয়ার মার্কেট ক্র্যাশ করে যায়। 13ই মে থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ এবং নির্মলা সীতারামন ফাইন্যান্স মিনিস্টার পাবলিকদের বলেছিল যে এখন আপনারা শেয়ার কিনে রাখুন, 4 তারিখের ফায়দা হবে, 4 তারিখে ফায়দা হবে। তাহলে ওরা প্ররোচিত করেছিল, প্রভাবিত করেছিল, ভারতবর্ষের মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। 30 লক্ষ কোটি টাকা শেয়ারের দাম কমে গেছে, 30 লক্ষ কোটি টাকার তাদের লস হয়েছে। তাহলে তাদের যখন প্রভাবিত করেছে, এই এক্সিট পোল কারা করে? হু আর দে? আমরা কেউ কিছু জানি না। একটা কোম্পানির নাম বলা থাকে, কি ভিত্তিতে করে, কিসের ভিত্তিতে করে, কেন করে, কিসের জন্য করে, কার ফায়দার জন্য করে, কার মালিককে, তার সঙ্গে কি যোগাযোগ আছে নরেন্দ্র মোদী, কি যোগাযোগ আছে অমিত শাহ, কি যোগাযোগ আছে নির্মলা সীতারামনের, কি যোগাযোগ আছে বিজেপি পলিটিক্যাল পার্টি। এটা তো প্রমাণিত হয়েছে, ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ করাপ্টেড পলিটিক্যাল পার্টির নাম ভারতীয় জনতা পার্টি। আমি তো বলছি না, এ তো নির্মলা সীতারামনের হাজবেন্ড বলছে। ওরা তো সব স্ক্যান্ডেলই করছে। এর আগে তো আমাদের ইলেকশন
ইলেকট্রাল বন্ডের স্ক্যান্ডাল করেছে, এখন এই এক্সিট পোলে স্ক্যান্ডাল করছে, তাই ইনভেস্টিগেশন হওয়ার দরকার আছে। তাই জন্য আমরা এসেছিলাম। আমরা এর আগে চেয়ারপারসনকে চিঠি দিয়েছিলাম, চেয়ারপারসন আজকে নেই, চেয়ারপারসন মিট করেনি, ওনাদের 3 জন রিপ্রেজেন্টেটিভ মিট করেছে, ব্যবহার ভালো করেছে, আমি বলবো না যে ব্যবহার খারাপ করেনি, কিন্তু মিষ্টি হাসি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, আর কিছু করেনি, কোনো কাজ নেই, ভালো ব্যবহার করেছে। আমরা তো আর জামাই খুঁজতে আসিনি, আমরা কাজের জন্য এসেছিলাম, তা ওনারা মিষ্টি হাসি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। তা আমাদের এর বিরুদ্ধে কন্টিনিউ করতে হবে, আমাদের এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে, আমাদের ইনভেস্টিগেশন চাইতে হবে। সেবি যদি ইনভেস্টিগেশন না করে, সেবিও ভয় খাবে, আমরা বুঝতে পারছি। সেবির অ্যাপয়েন্টমেন্ট কে দিচ্ছে? সেই তো নরেন্দ্র মোদী, নির্মলা সীতারামন, অমিত শাহের লোকেরা। তা প্রভু যারা, যে মালিক যারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে কি ইনভেস্টিগেশন করতে পারে নাকি? কিছুই করবে না, ইনভেস্টিগেশন কিছুই করবে না, কিছুই হবে না। তাই আজকে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বারবার বলেছে যে তোমরা যাও, যে এটার এগেইনস্টে বলো, এবং শিবসেনার সঙ্গে কথা বলো, এনসিপির সঙ্গে কথা বলো। আমরা কথা বলেছিলাম আগে থেকে, কথা বলে আজকে আমরা শারদ পাওয়ারজির সঙ্গে সকালবেলা দেখা করেছি, কাটসি ভিজিট করেছি। আমাদের অরবিন্দ এসছে, অরবিন্দ তো আমাদের খুব ভালো ব্রেকফাস্ট খাইয়েছে, কিন্তু এটাও বলে দিলাম। জাস্ট মিনিট ম্যাডাম, একটু মজার কথাটাও তো বলতে হবে। ভালো ব্রেকফাস্ট খাইয়েছে তো হয়েছে। তা আমরা সবাই মিলে আজকে এসে, এনসিপি থেকেও এসছে, আমরা সবাই, বিদ্যা চৌহান এসছে, আমরা সবাই মিলে, এটা হচ্ছে शुरू करना हमारा, ये शुरुआत है, पार्लियामेंट का सेशन का पहले शुरुआत है। मोदी तुमको दिखा देंगे 18 लोकसभा क्या होगा।